Hello students, this is Priyanka Sinha from Careers Catalyst. Today in this video we will talk about our new chapter of physics, that is force and laws of motion. This chapter is very interesting as we already talked about motion in previous chapter, so it is interrelated to that only, because in previous chapter we discussed about motion, right? We talked about what is motion, we talked about speed, we talked about velocity, distance and displacement. These all things we discussed there. Now in this particular chapter we are going to talk about what is the main cause of motion. Motion तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? What are the main cause of motion? So definitely there is only single answer. The main cause of motion is force. And अगर डिटेल में आंसर देना है तो it is unbalanced force, because whenever we apply force on any object then we can do some changes there. We can do, it is not necessary you will always able to do some changes, right? Okay, so if you are able to do some changes there, then definitely you can define motion on that object. So first we will talk about here what is motion. Motion we already talked. We will talk about force here. So what is force? Force is what? It is a physical quantity which changes or tends to change. Listen carefully, which changes or tends to change the shape, size and position of an object. As you can see here, definition is written here. You can note down from here also, it will help you. What is force का definition यहाँ पे लिखा है? It is a physical quantity which changes or tends to change the shape, the size, the position, the direction of motion of an object. Then we define that as what? Force. Just make it clear, here it is written which changes or, listen carefully, tends to change. मतलब अगर आप कोशिश भी कर रहे हो चेंज करने की मोशन को या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को, then also we will say force is applied. कोई ज़रूरी नहीं है कि after application of force there will be always some changes. Let me give you one example. Suppose I have a box, a small box. If you will apply some force there, then definitely you will able to change the position of that object. अगर वो heavy नहीं है तो, if it is not heavy, then definitely we will able to change the position of that object, right? But अगर मैं बोलूँ आपके रूम का एक wall है, just try to pull that wall or push that wall, whatever you want to do, just do it. Are we able to do this? No, definitely we are not. Why? Because there you are applying force. Definitely you are applying force. अगर मैंने आपको काम दिया just push this wall, तो if you are tending to do, then also I have to say yes you applied force there, but it's okay, no work is done there. ऐसा ही बोलेंगे ना. After application of force also it is not necessary work done will be seen there. So if you are able to see some changes, then we will say force is applied. If you are not able to see any changes there, then also we will say force is applied. हाँ, work done बोला जाएगा तो we will say no work is done here. But if we talk about force, then we will say yes, force is applied there. Because if you are tending to do so, any kind of changes if you want to do, tending to do, then also we have to say force is applied there. Hope it is clear to you. This is the definition of force. It is a physical quantity which changes or tends to change. Listen, tends to change. कोशिश भी करते हो तब भी we will say force is applied. क्या कर सकते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? वी कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. You can increase the speed of an object, you can decrease the speed of an object, you can change the shape of object. ये सारी चीजें आप कर सकते हो after application of force, if you apply force on that. Then now we will talk about the standard unit of force. What is the standard unit of force? We already know the standard unit of force is what? Newton. Okay, now we will talk about which quantity it is, because in chapter motion we discussed about some physical quantities and we categorized that in two groups, whether it is a scalar quantity or vector quantity. Hope it is clear to you what is scalar and vector quantity. So scalar quantity are those quantity of physics in which only magnitude is needed, right? And the vector quantity are those in which we need magnitude as well as what? Direction also. So आपको ये भी याद होगा हम लोग force को categorize करते हैं किसमें? Vector quantity में. Why? Because whenever we apply force on any object, then
along with magnitude, along with the energy or amount of energy that you are providing there, we need direction also. आप क्या करोगे when we apply force? Whether you will push it, you will pull it, you will drop it, you will throw it, you will drag it, you will scratch it, यही सब करने वाले हो. Whatever you are doing there, in all these cases we need to apply some amount of energy that is defined as what? Magnitude. And along with that we need to define direction also. Push कर रहे हो तो you are moving outward, pull कर रहे हो तो you are moving inward. Whatever you are doing, in all the cases, along with magnitude, along with energy, we need to define direction also. That's why force is defined as what? Vector quantity. Why? Because it contain, एक क्या contain करता है? First one is magnitude, right? It contain magnitude as well as direction also. It need two things, magnitude as well as direction, right? So this is the vector quantity. What? Force. Force is defined as what? Vector quantity. Now we will talk about what is balanced force and what is unbalanced force. So whenever we apply force on any object, then I told you earlier whether you will see some changes or you will not able to see any kind of changes. So according to that, we categorize force in two groups. Whether it will be a balanced force or that can be a unbalanced force also. Suppose you are applying force on any object and you are not able to see any changes there, then that type of force will be defined as balanced force. It's very simple. And if you are applying force on any object and you are able to see some changes there, then definitely we will say it is defined as what? Unbalanced force. Now let's take some example. Firstly, we will talk about these 2 points, which is very important. You need to learn these 2 points because they will ask you in exam, what is the difference between balanced and unbalanced force? Then definitely we need to write at least 2 points there. Along with example also, you need to write some example also. That I'll explain later. But पहले हम लोग बात करते हैं what are these 2 points. So, balanced force. See here. Resultant of all the forces acting on that object will be equal to 0. मतलब आप जो भी फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर 0 लग रहा है, रिजल्टिंग मीन्स टू से व्हाट? नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू 0, देन वी विल डिफाइन दैट एज व्हाट? बैलेंस फोर्स. And if you are applying some force on that object and here the net force is not equal to 0, then we will say this force as what? Unbalanced force. Very simple. And in balanced force, see, it cannot changes the state of rest or state of motion or state of direction of motion also. अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, अगर वो फोर्स बैलेंस है, then definitely you will not able to change its state, you will not able to change its position, you will not able to change its motion, and even you will not able to change its direction of motion also. So if you are not able to do these all things, we will say balanced force is applied there. And if you are able to do, or if you are able to change the state of motion, able to change the state of rest, or able to change the direction of motion, then we will say unbalanced force is applied there. Now we will talk about these two forces by taking some example. Then it will be more clear to you. Okay. So, पहले मैं आपको बता दूं. Suppose I am taking a ground here. This is a ground and I am putting an object over this particular सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है. ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ मास होगा. लेट्स टेक द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज m. ओके. सो यू नो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर रखी है, कोई भी, एनीथिंग यू कैन टेक, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, एनी मैटर यू कैन टेक. कोई भी मैटर अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मास होगा, बिकॉज मैटर का डेफिनेशन ही है, मैटर इज व्हाट? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विल हैव सम मास, राइट? सो दिस इज डिफाइंड एज व्हाट? मैटर. सो हियर आई एम टेकिंग अ सब्सटेंस हैविंग मास m. So you know how much force it will exert over the surface of earth? It will exert a force. It always continuously exert a force. Okay, that force is equal to the weight of this object. Okay, that force is equal to what? Weight of this object. Now what will be the weight of this object? अगर उसका मास m है,
उसका मास जो भी है, नॉट नेसेसरी कि m लेना है, जो भी मास है, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट मास विथ ग्रेविटी. So if the mass is m here, then the gravity is what? G. So if you will multiply it, then what you are getting here? mg. So this is the weight of this object, you can say. अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg होता तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 10 into g. And actually we know the value of g also, but I'm not going to discuss about g in this chapter because we have a chapter gravitation in which we will talk about these all things in detail. So let's suppose that now कि कोई भी object है उसका कुछ भी mass होने दो, तो उसका जो weight है that will be the product of its mass and gravity, and that much amount of force will be exerted by that object on the ground. So अगर मैं पूछूं कि ये object जिसका mass m है, how much force it will exert on the ground, so we will say it will exert the force which is equal to what? m into g on the ground. And अगर ये ground पर mg यानी अपने weight के equal force exert कर रहा है, then definitely the earth will also exert the same force on this object also. So how much force will be exerted by earth? It will be also equal to what? How much? mg. कोई भी मास होने दो, कोई भी वेट होने दो ऑब्जेक्ट का, जितना वो अर्थ पर एग्जर्ट करेगा, अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगी. डेफिनेटली अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, देन इट विल एग्जर्ट मोर फोर्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड अर्थ विल ऑल्सो एग्जर्ट exactly equal force on that object also. So here the force exerted by earth on this object will be equal to what? mg. And the force exerted by this object over the surface of earth will be also equal to what? mg. So here direction की बात करते हैं. Object is acting the force in downward direction, right? And earth will exert the force in upward direction, but both are equal. How much? Both are equal to m into g. Both are equal, not only equal, along with it is opposite also, है ना? So equal and opposite force. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, देन द नेट फोर्स विल ऑलवेज इक्वल टू 0. जस्ट लाइक टग ऑफ वार एग्जाम्पल. टग ऑफ वार एग्जाम्पल में सपोज अगर दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीत रही है, देन डेफिनेटली जो इधर के ग्रुप वाले लोग हैं जितना फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या रोप को खींचने के लिए, दूसरी ग्रुप वाले भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं. तो हियर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड देयर, देन व्हाट? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, देर विल बी नो नेट मूवमेंट, कोई जीतेगा नहीं. सो इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल देर विल बी नो नेट मूवमेंट और नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड अल्टीमेटली इट विल इक्वल टू व्हाट? 0. सो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0. यू कैन से बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, राइट? बैलेंस फोर्स आर व्हाट? ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर. जितना एक तरफ से लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना ही लगेगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल इन विच वी टॉक्ड अबाउट बैलेंस फोर्स, बट दिस वॉज द केस ऑफ वर्टिकल एग्जाम्पल. दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व. अभी अर्थ आप पे फोर्स लगा रही है, हमें पता नहीं चलता. हम अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, राइट? सो इन दिस केस वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली डिटरमाइन कि हम लोग फोर्स लगा भी रहे हैं या नहीं, राइट? तो वी विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल जिसमें कि वी विल ऑब्जर्व वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर बट स्टिल देयर इज no net movement. Why? Because the force are equal and opposite. So let's take one more example. Now again I am taking a same box, but here we will not talk about vertical and vertically upward and downward force. Here we will talk about horizontal force. Suppose we are applying 10 Newton force on this object, and I'm just putting arrow here. This arrow will show you the direction. As we are talking about force, and force is what? Vector quantity, then definitely we need to put arrow here. So we are putting arrow here also. 10 Newton force I am applying to this box, and at the same time from opposite direction, exactly opposite direction. मतलब अगर ये left to right लगा रहे हैं तो वो right to left लगा रहे हैं. This kind of force we are applying here, and the same amount of force we are applying here also. How much? 10 Newton.
अब मैं आपको पूछूंगी कि इफ यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स फ्रॉम दिस साइड एंड 10 न्यूटन फोर्स फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, सो आर वी एबल टू मूव दिस बॉक्स और इफ आर यू एबल टू सी एनी चेंजेस हियर, देन डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो चेंजेस. व्हाई? बिकॉज जितना तुम इधर से लगा रहे हो फोर्स उतना ही उधर से भी लग रहा है. सो हियर द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी विल इक्वल टू 0. You know, we can prove this mathematically also. How? Let me show you. Suppose take this force as F1. मान लो हमने इसको क्या ले लिया, F1. And let's suppose this force take as F2. So F1 is equal to how much? 10 Newton. But we need to put arrow here also. I'm putting the arrow. This is 10 Newton. Okay. Now let's talk about F2. F2 is how much? It is also 10 Newton. बट एरो कैसा है हमारा, ऐसा है ना. दिस इज व्हाट 10 न्यूटन एंड दिस इज व्हाट 10 न्यूटन. बट एज यू कैन सी द एरो आर अपोजिट टू ईच अदर. सो इफ यू वांट टू फाइंड द नेट फोर्स, नेट मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. सो अगर हमें नेट फोर्स ढूंढना है तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 प्लस व्हाट F2. बट F1 का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा. F2 का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा. सो वी आर नॉट एबल टू एड दीज टू. करना क्या पड़ेगा आपको, इफ यू आर टेकिंग F1 फोर्स एज 10 न्यूटन, देन F2 फोर्स को लेने के लिए आपको पहले इसका डायरेक्शन बदलना पड़ेगा. सो हाउ वी विल डू दिस, इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरो. मान लो तुमने इस एरो को चेंज करके इधर कर दिया. ओके, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरो, देन यू नीड टू पुट नेगेटिव साइन हियर. नाउ इट इज ओके. अब देखो ये 10 न्यूटन एंड ये माइनस 10 न्यूटन. वाई 10? बिकॉज F2 की वैल्यू तो 10 न्यूटन ही है, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन विच वी आर टेकिंग हियर by changing the direction of this arrow, so we need to take that. So ultimately 10 minus 10 is equal to what? 0. This is the mathematical term, so it is equal to what? 0. So here we proved whenever we apply balance force on any object, then there will be no net movement. Why there will be no net movement? Because there actually no force is applied. यहाँ पर कोई force ही नहीं लग रहा है. अगर इधर से इतना तो ultimately उस object पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, वी आर गेटिंग 0 हियर. दैट मीन्स नो फोर्स एक्चुअली वी आर अप्लाइंग हियर. सो हाउ कैन वी सी एनी चेंजेस, बिकॉज वेन एवर वी अप्लाई अनबैलेंस फोर्स देन ओनली वी विल एबल टू सी सम चेंजेस. तो आपको यहाँ पर आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो हाउ कैन वी सी चेंजेस? तो वी विल नॉट एबल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ चेंजेस. बट इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स what happen? Let's take one example here. In case of unbalanced force, suppose मैंने यहाँ पर बॉक्स लिया, we are applying 20 Newton force from this side and we are applying 10 Newton force from this side. Again ये F1 है और ये क्या है, F2 है. Let's suppose F1 is equal to 20 Newton we are taking, तो we need to put arrow. It will be like this. And F2 की वैल्यू निकालते हैं, it is how much? 10 Newton and we need to put arrow like this. But if you want to actually change the direction of this to make it similar, then only we will able to add. So what we need to do? We need to take it like this, right? By putting negative sign. Then the arrow will be in same direction. So only unidirectional arrow can be added here. That's why this is a term of vector that we are going to discuss in 11th standard. So it's okay. Just keep this point in your mind कि अगर opposite direction है तो we are not able to add that. हमें पहले करना क्या है, उनको unidirectional बनाना है. And for that we need to put negative sign there. So we did here. Now if you want to find net force here, so F1 plus F2 will be, see here, 20 plus minus 10, right? Because arrow ऐसा है अभी. So ultimately इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन. Now we need to put arrow here also. अभी इन दोनों में से कौन बड़ा है? Definitely 20 बड़ा है, तो object will move in this direction. So by putting this arrow we are able to define कि if the unbalanced force is applied here, then okay, what will be the net force that we already got here. But rather than that we need to define direction also, in which direction ultimately this object will move, that also we can find here. So we did it. This is 10 Newton force and this arrow shows that the body will move in this direction.
Okay, so here we applied unbalanced force and we are doing some changes here by applying unbalanced force. So by applying balanced force, definitely we were not able to do any changes on object. But if you are applying unbalanced force, then we are able to do some changes there. If you want to change the state of motion, listen carefully, this point is very important. If you want to change the state of motion, whether from rest to motion or motion to rest, then definitely we need to apply unbalanced force. But we need to apply unbalanced force here to do what? To do some changes. रेस्ट से मोशन में लाना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना है. बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट ऑब्जेक्ट इन दैट स्टेट ओनली, देन नो नीड टू अप्लाई एनी अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब लेट मी शो यू सम एग्जांपल ऑफ, सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, उसको करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या? नो नीड टू अप्लाई एनी फोर्स. इफ इट इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट. बट अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स, external force, unbalanced force continuously. Why? You know, because there are lots of additional factor to reduce that. We need to apply here unbalanced force. That we will prove here in this chapter only, but in first law of motion. Here we discussed about अगर कोई बॉडी को आपके स्टेट को, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना है, देन ऑब्वियसली वी नीड टू अप्लाई अनबैलेंस फोर्स. बट अगर आपको उसी स्टेट में उसको कंटिन्यू रखना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. बट हम डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल देखते हैं उन सब में वी नीड टू अप्लाई अनबैलेंस फोर्स. Why we need to apply unbalanced force there? Because of some additional factor. Most common example is friction. Friction हमेशा एक्ट करती है. इसके लिए हमें कंटिन्यूसली किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के स्टेट में अगर रखना है तो हमें कंटिन्यूसली क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है. बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कोई बॉडी के स्टेट को आप चेंज कर रहे हो तो ही वी नीड टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है देन नो नीड टू अप्लाई एनी अनबैलेंस्ड फोर्स टू continue that object in same state, whether it is a state of motion or state of rest. Okay, so hope it is clear to you. In this video we talked about what is force and what is balanced and unbalanced force. In next video I will explain you about the laws of motion. So thank you for watching this video.